Hi there, how are you all? Hope you're all doing fine. I'm Shivani, your English coach. Welcome to my channel. Today we are going to do a very important topic, the conditionals. I'll suggest you to watch the video till the end, so don't go away. Look at these sentences. If you work hard, you score good marks. If you work hard, you'll score good marks. If you worked hard, you'd score good marks. If you had worked hard, you would have scored good marks. These sentences look quite similar, but do they mean the same? If you look closely, you'll realize they don't. ये sentences एक जैसे दिखते हैं, पर क्या उनका मतलब भी सेम है? नहीं. अब ध्यान से देखिए, आपको differences ज़रूर नज़र आएंगे. Let's find out the similarities first. You'll notice all the sentences have two parts or two clauses. One is an if clause, which begins with if. It's a conjunction here. Conjunction, as you know, joins two sentences. The second part is the main clause. The if clause tells about a condition and the main clause talks about its outcome or result. That is why they are known as conditionals. इन sentences में कुछ similarities है, जैसे इन sentences के दो part है. पहला if clause जो if से शुरू होता है और दूसरा main clause. if clause condition के बारे में बताता है और main clause उसका result बताता है. जैसे अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा. ऐसे sentences को conditionals कहते हैं. Confusing? हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा. So don't worry. Now let's look at where they differ from each other. You'll notice the main difference lies in the tenses of the verbs, due to which the meaning of the sentences also change, and that is what differentiates them into different types of conditionals. अब अगर आप इन sentences को एक बार फिर देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि इन sentences के verbs के tenses different है, जिस कारण से इनका मीनिंग भी चेंज हो गया है और इसी बेसिस पर इनको हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशनल्स में कैटेगराइज कर सकते हैं. दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक. प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड. द वीडियो एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है. कंडीशनल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. नंबर 1 ज़ीरो कंडीशनल, नंबर 2 first conditional, number 3 second conditional, number 4 third conditional, and you also have mixed conditionals. Today we'll do the 0, 1, 2 and 3 conditional, first, second and third. 0, first, second and third conditionals. Let's take the 0 conditional first. So let's see what is a 0 conditional. Now, let's look at the structure of such sentences first. If plus present simple, present simple. Here, the first part of the sentence or the if clause tells you the condition and the verb is in the present simple. You have to pay special attention to the tenses because tenses play a very important role, I've told you before. And the main clause tells the result and it's also in the present simple tense. So both the condition and the result, they are both in the present simple tense. The 0 conditional tells about a general truth, a fact that definitely happens. A fact that definitely happens. Let's look at an example. If you study hard, you get good marks. So the condition is if you study hard and the result is
you get good marks. So in most of the cases, if can be replaced by when because the result is always the same. When you study hard, you get good marks. Isn't it? Don't you? So when you study hard or if you study hard, you get good marks. That's a general truth. Let's look at the negative sentences. If you don't study hard, you don't get good marks. When you don't study hard, you don't get good marks, isn't it? Then there is another word, unless, which can also be used in negative sentences in place of if. Unless you study hard, you don't get good marks. So, zero conditionals tell about a general truth, tendencies, scientific facts, and rules. When in this sentence you have seen, when someone works hard, the result is always good. तो हम जनरल ट्रूथ, हैबिट्स और उनके साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में जब हम बताते हैं तो ज़ीरो कंडीशनल्स यूज़ करते हैं. ज़ीरो कंडीशनल्स में कंडीशन और रिज़ल्ट दोनों प्रेजेंट टेंस में होते हैं. इफ़ की जगह व्हेन भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि रिज़ल्ट हमेशा सेम होगा क्योंकि हम जनरल ट्रूथ की बात कर रहे हैं. नेगेटिव सेंटेंसेस में अनलेस भी यूज़ कर सकते हैं. राइट? सो लेट अस लुक एट सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ज़ीरो कंडीशनल्स. सो हियर आर द एग्जाम्पल्स. If or when we boil water, it turns into steam. If we can use if or when, either of the two. So when we boil water, it turns into steam. This is a scientific fact. When or if you don't eat food, you feel hungry, isn't it? It's a general ट्रूथ है कि नहीं. जब आप खाना नहीं खाते हैं तो आपको भूख लगती है. जब हम पानी बॉईल करते हैं तो वो स्टीम में चेंज हो जाता है. तो ये कंडीशन कभी चेंज नहीं होता है. राइट? नाउ लेट्स लुक एट द फर्स्ट कंडीशनल. फर्स्ट कंडीशनल टॉक्स अबाउट सिचुएशंस दैट कैन रियली हैपन इन द फ्यूचर. लेट्स लुक एट द स्ट्रक्चर. If plus present simple. The if clause is in the present simple. The main clause has the subject plus will plus base form of the verb or the infinitive. In place of will, we can also use shall, can, or may. For example, if you work hard, you'll get good marks. There is a probability or possibility that you will work hard and get good marks. At the moment, you are not working hard, but there is a good chance or good possibility that you will work hard or you may work hard and score good marks. So these are situations that might or might not happen in future. Note, the probability of action is of the if clause, not the main clause or the result clause. फर्स्ट कंडीशनल में इफ़ क्लॉज प्रेजेंट टेंस में होता है और मेन क्लॉज में हम सब्जेक्ट प्लस विल प्लस इन्फिनेटिव या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं. ये पॉसिबल कंडीशंस के बारे में बताता है. जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, अगर तुम हार्ड वर्क करोगे तो तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे. काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि तुम हार्ड वर्क करोगे और अच्छे मार्क्स लाओगे. लेट्स लुक एट अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स. If it rains, we will not go for shopping today. If you get late, you may miss the flight. अगर बारिश होती है तो हम शॉपिंग के लिए नहीं जाएंगे. अगर तुम देर करोगे तो तुम्हारी फ्लाइट मिस हो जाएगी. Next is the second conditional. We use second conditional when we talk about a present or future situation of low probability or possibility, or when we talk about an unreal situation of zero possibility or probability. The structure is
For the if clause, if plus past simple, and the main clause, subject plus would plus infinitive or the base form of the verb. Now let's look at the example. If she worked hard, she would get good marks. There is less probability that she would work hard and get good marks. Or there is zero probability that she would work hard, as she never works hard, so there is no possibility of her working hard and getting good marks. In place of would, we can use should, could, might, etc. सेकेंड कंडीशनल में प्रेजेंट या फ्यूचर सिचुएशन के बारे में बात करते हैं, जिसके होने की तो बहुत कम चांसेस हैं या एकदम नहीं हैं. अगर वो हार्ड वर्क करेगी पर उसके हार्ड वर्क करने के बहुत कम चांसेस हैं या बिल्कुल ही चांस नहीं है, क्योंकि वो कभी हार्ड वर्क करती ही नहीं है. उसके हार्ड वर्क करने के या तो लो प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी है या नहीं तो ज़ीरो पॉसिबिलिटी है. लेट्स लुक एट सम मोर एग्जाम्पल्स. इफ़ आई वर अ बिलियनर, I would own a fleet of cars. If I met Miss Universe, I would take a selfie with her. तो ये दोनों सेंटेंसेस, दोनों एग्जाम्पल्स के होने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर है या ज़ीरो है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. सो ये अनरियल कंडीशंस हैं. नाउ वी कम टू द थर्ड कंडीशनल. थर्ड कंडीशनल इज़ यूज्ड टू talk about a past unreal hypothetical situation, or to show regret or comment about past situations, something we wished should have happened or could have happened but did not happen. Let's look at the structure. If clause, if plus past perfect, remember past perfect, and main clause, subject plus would plus have plus past participle. In place of would, we can use could, should, might, etc. Now let's look at the example. If she had worked hard, she might have scored good marks. It did not actually happen, but could have happened. Something you wish had happened, but now nothing can be done. That particular time or situation is over. थर्ड कंडीशनल पास्ट टेंस के बारे में बताता है, जो हो चुका है और अब नहीं हो सकता है. ये अनरियल हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में बताते हैं. जैसे वो अगर वर्क हार्ड करती तो उसे अच्छे मार्क्स मिलते, पर उसने वर्क हार्ड नहीं किया तो उसे अच्छे मार्क्स कैसे मिलेंगे. तो ये अनरियल सिचुएशन है. Now let's look at a few more examples. If we had finished our work on time, we could have gone for a movie, but that did not happen. If I had met her before, I might have proposed to her. Now this is a regret, right? Some very important things to remember. The position of the if clause and the main clause or the result clause can be interchanged. There won't be any change in meaning. If the if clause is in the beginning, you can see a comma after the if clause. Now look at the sentence. You may miss the flight if you get late. There's no comma after the main clause. No comma is required and there's no change in meaning. हम इफ़ क्लॉज और मेन क्लॉज के पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं, जैसा आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं. उनके मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं आएगा. अगर इफ़ क्लॉज हम शुरू में यूज़ करते हैं तो इफ़ क्लॉज के बाद कॉमा लगाया जाता है, पर अगर मेन क्लॉज से सेंटेंस शुरू होता है तो कॉमा की कोई ज़रूरत नहीं है. दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द लेसन. अगर आप ईच कंडीशनल्स को डिटेल में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा. एंड डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक, शेयर द वीडियो
And if you haven't subscribed yet, please do subscribe to my channel. Take care. Bye.